on course recording. So EMF ta kono work done in carrying a unit charge along the closed circuit. ହେଲା से कहूची work done किए करिवो by the cell, work done by the cell, total work done in carrying a unit charge along the closed circuit. पूरा क्लोज सर्किट रे ए क्लोज सर्किट रे पूरा चार्ज टाकू मूवमेंट करिया रे टोटल वर्क डन जति की हबो दैट इज कॉल्ड योर ईएमएफ सेटा को ईएमएफ कहा जाय हैला तो एठी हमें देखले जे दीटा वर्क डन हबो गोटे एक्सटर्नल सर्किट रे गोटे इंटरनल सर्किट हैला एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट कोन तुमको ऑलरेडी कहिसलेनी हैला तो एठी हमें लिखि दिछि मार्किंग कर दिछि ए और बी हमें ए और बी एठी मार्किंग कर दिछि बतन कोन लिखिबे एठी वर्क डन कैरिंग ए यूनिट चार्ज work done in carrying a unit charge from A to B हैला against external resistance against external resistance against the external resistance हैला plus work done in carrying a unit charge work done in carrying a unit charge from B to A against internal resistance so दीटा रेजिस्टेंस एटी काम करूची गोटे होची एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आउट होची इंटरनल रेजिस्टेंस तो जेतला हमर एक्सटर्नली हमें चार्ज को नउचे ताको अपोज करिवो किए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट भीतर चार्ज जाउची तो आयंस जाउची ताको अपोज करिवो किए इंटरनल रेजिस्टेंस दीटा को अपोजिशन जुगु दीटा वर्क डन होची दीटा को वर्क डन मिसिले हमर होची ईएमएफ दीटा को वर्क डन मिसिले हमर होची ईएमएफ तो लिखि पारे एटी E इज इक्वल टू V प्लस V डैश तो ऑलरेडी V टा हम कहि सारची V टा होची हमर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V डैश टा होची वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन द इलेक्ट्रोलाइट हला वोल्टेज ड्रॉप तो एठी हमें ओम्स लॉ पकेबा by Ohm's law the Ohm's law पकोजे हला V is equal to तुम जानछो I into R कैपिटल V स्मॉल V देखछे V डैश एटा भी होची I into स्मॉल r एटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप तो एटी पके दवा सब्स्टिट्यूट करिया E is equal to V जार पकेबी IR V डैश जार पकेबी I into स्मॉल r हैला तो ये आई कॉमन नहीं गले आसला आर प्लस आर हैला ए जब करंट बाहा करिया हमें आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर एटा मिल गला हम करंट रो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टर्म्स रे हमरो करंट ता बाहरी गला हैला तो ई जगह रे जदी हमें बाहर करछे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ता बाहर करछे V जोटा इरा करछे V हैला तमे जानछो V टा होची ओम्स लॉ अनुसार I into R current flowing in the circuit into your external resistance हैला तो एठी करंट रो फार्मूला में बाहर करले E by R plus R into आमर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अछि R तो फार्मूला बाहरला आउटे फार्मूला एठी E R by R plus R हला एटा बाहरला हमरो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फार्मूला इन टर्म्स ऑफ EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस
फॉर्मूला सब मन रखियो हला बर्तमान आम यदि ये आउ गोटे फर्मुला जाऊे तार आउ गोटे फर्मुला कौन यू बाहर कर इक्वेशन रु v इज इक्वल टू लिखिपर कौन e माइनस v डैश e माइनस v डैश तो ये e रहा v डैश टाइम जाने i इंटू स्मॉल r v डैश टा हूँ i इंटू स्मॉल r है तो ये छोट माने आम जो स्मॉल r टा काढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस टा काढ़ा जदि केते बाहर ये लिखिपर आई आर इज इक्वल टू e माइनस v सेमती ये बाहर पार r टा r इज इक्वल टू e माइनस v बाई i हम आम जाने i टा हूँ v बाई r बोली e माइनस v बाई r एटा जाने आई रो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बाहर करिया या सॉल्व कले कौन बाहर e माइनस v बाई कैपिटल V इंटू r है तो ये बाहर इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला r इज इक्वल टू e माइनस v बाई v है इंटू r এটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স এর ফর্মুলা বুঝি পারছো Yes, sir. ହେଲା करंट फ्लो करिवो नाही I इज इक्वल टू 0 क्लियर जेतले सेल टा ओपन सर्किट थी ओपन सर्किट माने सेल कनेक्ट हे नथिवो हैला सेल इज नॉट कनेक्टेड ऑन करने स्विच ऑन करने नो करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट कोनोसी करंट फ्लो करनी से टाइम रे हम ओपन सर्किट वोल्टेज टा काढिवा दीटा का टर्मिनल अंडर रे दीटा का टर्मिनल भितरे ओपन सर्किट वोल्टेज कहंदी V ता तळे ओपन लिखा जाए ओपन सर्किट वोल्टेज हैला दैट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ मन रख टोटल ईएमएफ सेठी अवेलेबल हबो जतले सर्किट टा माने जतले सेल टा हमर कनेक्ट हेनी जहा थिबो से ईएमएफ टा अवेलेबल हबो ओपन सर्किट अक्रॉस हैला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल is equal to its EMF. Then potential difference टा EMF संगे समान हो equal to the EMF. There is no current when no current is being drawn from the cell. When no current is drawn from the cell. जितने कौनसी करंट ड्रॉ करूनी से टाइम रे आमर पोटेंशियल डिफरेंस टा आसीबो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल जो अछि बैटरी टर्मिनल इज इक्वल टू द ईएमएफ हला ईएमएफ से समान आसीबो ए केस टा मन रखियो सेकंड केस जेतले सेल टा कनेक्ट हो व्हेन सेल इज कनेक्टेड करंट फ्लो करियो क्लोज सर्किट अछि ने करंट फ्लो करिया स्टार्ट करियो हला रियल सेल जोटा कहते रियल सेल है कनेक्ट ओके तो से जगह कौन हम मन रख सब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज ऑलवेज लेस दैन EMF सब कम आसो कौन पे कम आसो तुम कही सारे किछिटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो कोठी इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सेल रो किछिटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है आम कौन करवा पाइबा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टा पाइबा एटा कम पाइबा ईएमएफ टू ऑलवेज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस दैन ईएमएफ इज ऑलवेज लेस दैन ईएमएफ टू सब कम प्रैक्टिकल केस एटा सेटा हो आइडियल केस ये प्रैक्टिकल केस आम जो कनेक्ट करिया पूरा सर्किट रे सेल को से टाइम रे हमर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टा कम पाइबा ईएमएफ टू आसीबो बहुत कम हला बहुत माने बहुत फीबल ड्रॉप जे डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस केते रेजिस्टेंस अछि रेजिस्टेंस अधिका अछि तो ड्रॉप अधिका हो रेजिस्टेंस कम अछि ड्रॉप कमिबो बुझ पाला ना नहीं तो हमर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ता कहा पर डिपेंड करूछि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमर आसिला ये को फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करूछि
को फैक्टर से अफेक्ट कर फास्ट हूँ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फास्ट हूँ नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नेचर को इलेक्ट्रोलाइट आम यूज कर तुम इलेक्ट्रोलाइट विषय पढ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं तो आम को इलेक्ट्रोलाइट यूज कर डिपेंड कर ओके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है आउ कौन नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the electrolyte जदि इलेक्ट्रोलाइट हाईली कंसंट्रेटेड अच्छी ताहले इंटरनल रेजिस्टेंस अधिका हो जदि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कम अच्छी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो हला कंसंट्रेशन अधिका अच्छी अधिका कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट यूज करछे ताहले रेजिस्टेंस अधिका आसी कंसंट्रेशन कमेले हला इलेक्ट्रोलाइट रो कंसंट्रेशन कमे दबा हला ठीक है से कोन हबो आमे कम इंटरनल रेजिस्टेंस पाइबा हला बुझला जिसटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थर्ड रे कोन कहूची आउ कोन फैक्टर अफेक्ट करची डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द distance between the two electrodes directly proportional to the distance between the two electrodes हला दीटा इलेक्ट्रोड भितर केतिकी डिस्टेंस मेंटेन हिच हला ता ऊपर जदि हमें डिस्टेंस अधिका मेंटेन करिया ताले अधिका इंटरनल रेजिस्टेंस हबो डिस्टेंस कम मेंटेन हबो कम इंटरनल रेजिस्टेंस हो दीटा इलेक्ट्रोड भितर डिस्टेंस अधिका थिबो अधिका इंटरनल रेजिस्टेंस हबो दीटा को इलेक्ट्रोड भितर डिस्टेंस कम थिबो कम इंटरनल रेजिस्टेंस हो हला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ रे inversely varies inversely as the common area of the electrode immersed in the electrolyte it varies inversely hela inversely proportional to the area hela common area to the common area of the electrodes immersed in the electrolyte केतिकी इलेक्ट्रोड इमर्स की बुड़ी की अच्छी इलेक्ट्रोलाइट भितर हला तार एरिया संगरे इनवर्स प्रोपोर्शनल माने माने कोन जते अधिका इलेक्ट्रोड अधिका पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड बुड़ी की अच्छी इमर्स की अच्छी ताहले रेजिस्टेंस कम इंटरनल रेजिस्टेंस कम जदि कम पोर्शन बुड़ी की अच्छी इंटरनल रेजिस्टेंस अधिका पोर्शन बुड़ी की अच्छी इंटरनल रेजिस्टेंस कम पोर्शन बुड़ी की अच्छी इंटरनल रेजिस्टेंस अधिका हला फिफ्थ रे कहूची कोन इट इंक्रीजेस डिक्रीज इन टेम्परेचर हला इंटरनल रेजिस्टेंस increases hela with the decrease in temperature internal resistance increases with the decrease in temperature of the electrolyte hela जदि इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर कमुची तले ए जगह रे हमर कोन हो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़िबो हला जदि इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ुची इंटरनल रेजिस्टेंस कमिबो बुझला पांचटा का फैक्टर ए पांचटा फैक्टर बुझि पालो ना कोन असुविधा रहला बुझला